America is a poem in our eyes. Its ample geography dazzles the imagination, and it will not wait long for meters. ये words हैं Ralph Waldo Emerson के. American literature is distinctive in its thoughts and feelings. American literature of England का echo नहीं है, बल्कि it has a valuable contribution to the literature of world. Irving की writings and Hawthorne की कहानियाँ, Evangeline and Hiawatha of Longfellow, ये कुछ ऐसे अमेरिकन वर्क्स हैं जो अमेरिकन सीनरी, थॉट, कल्चर, कैरेक्टर को दिखाते हैं. And in recent years, American literature had a remarkable development. Hello guys, welcome to Study Villa with Monica, जहां हम आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी को आसान बनाते हैं. अगर आप अमेरिकन लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगे अमेरिकन लिटरेरी ट्रेंड्स, रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स, थीम्स एंड स्टाइल्स. सो इसे ध्यान से देखिएगा एंड वॉच इट टिल द एंड. लेट्स बिगिन. चलिए शुरू से शुरू करते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ यंग कंट्री and its literature is youngest of other national literatures. Let's take a dive into history of American literary movements and know about characteristics of American literature. अमेरिका का लिटरेचर इसके इतिहास की छवि है. लिखना यहाँ तब शुरू हुआ जब यूरोपियन सेटलर्स आए. इससे पहले नेटिव अमेरिकन्स अपने ओरल ट्रेडिशन को बढ़ावा देते थे. स्टोरीज वर टोल्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री की शुरुआत कॉलोनाइजेशन से हुई. The colonial period spread from 1600 to 1700. इस period का literature influence था not with just England, but also connected to French, Spanish, Dutch literature. During this period, religion played an important role. Most writings were sermons. इस era में कुछ topics cover किए गए related to issues of living in a new land, जैसे agriculture, traveling and slave narratives. इसी दौरान जेम्स स्मिथ ने यहाँ जेम्स टाउन कॉलोनी बनाई एंड ही रोट अ बुक ए ट्रू रिलेशन ऑफ वर्जीनिया, जिसे फर्स्ट अमेरिकन बुक माना जाता है. इसी पीरियड के कुछ और जाने माने राइटर्स थे, जैसे विलियम ब्रैडफोर्ड एंड एन ब्रैडस्ट्रीट. ब्रैडफोर्ड वॉज अ प्यूरिटन राइटर एंड ही रोट ऑफ प्लाईमाउथ प्लांटेशन, विच इज़ ए डिपिक्शन ऑफ डिफिकल्ट लाइफ इन ए कॉलोनी. अगर आप प्यूरिटनिज्म के बारे में और जानना चाहते हैं गाइस, तो देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक प्यूरिटनिज्म. यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट. लेट्स कंटिन्यू. एन ब्रैडस्ट्रीट ने भी इस दौरान पर्सनल पोएट्री लिखी. शी इज ऑथर ऑफ टू माई डियर लविंग हस्बैंड. 1700 से 1800 में कॉलोनियल सिस्टम से डिससेटिस्फैक्शन बढ़ती गई एंड सो लिटरेचर चेंज इट्स शेप. दिस वॉज रेवोल्यूशनरी पीरियड, जिसमें राइटिंग पॉलिटिकल, एंटी ब्रिटिश होने लगी. इस पीरियड में रीजन एंड एनलाइटमेंट पर फोकस था. सो दिस पीरियड वाज आल्सो नोन एज एज ऑफ रीजन. एसेज, पैम्फलेट्स, स्पीचेस became popular over religious Puritan writings. Benjamin Franklin, Thomas Paine, Thomas Jefferson were big names. And if you want to know more about revolutionary prose, you can have a look at the previous video on this topic, revolutionary American prose. Franklin तो guys Renaissance man माने जाते थे. He was a person with many skills. He was not just a writer but a politician, inventor, publisher, humorist. उनकी book The Way to Wealth में छुपी है advice to be successful. His style was plain and simple. His autobiography was first to depict American dream. Thomas Paine famous हुए अपने sensational pamphlet Common Sense के लिए. It was a sharp critique of colonial system. उस समय शायद ही कोई ऐसा था जिसने इस पैम्फलेट को नहीं पढ़ा होगा. इसी तरह थॉमस जेफरसन was politician and third president of USA. His main contribution was Declaration of Independence, which was adopted on 4th July 1976. 1800 के बाद कुछ नए आइडियाज का बर्थ हुआ, which spread in Europe and swept America too. The writers urged to produce new ideas. This period was romantic period of American literature. In this period, the writings were less political and there was focus on nature and individualism. एक group of writers थे Knickerbockers. ये वो writers थे जिन्होंने Knickerbocker magazine में contribution दिया. ये नाम actually Washington Irving की A History of New York by Dietrich Knickerbocker से inspired है. Irving पहले professional writer थे अमेरिका के जिन्होंने short stories का trend शुरू किया. His most famous short story was Rip Van Winkle. इसी तरह जेम्स पेनेमोर कूपर ने भी लाइफ इन वाइल्डरनेस पर 5 नॉवेल्स लिखे कॉल्ड लेदर स्टॉकिंग टेल्स. एडगार एलन पो
ये एक बेहद इम्पोर्टेंट फिगर रहे अमेरिकन लिटरेचर के। उनकी लाइफ दुख से भरी थी। He was unsuccessful in studies, drank alcohol. इसलिए उनकी राइटिंग्स ग्लूमी और बिजार थी। His characters were murderers, alcoholics and desperate lovers. इन्होंने सबसे पहले हॉरर एंड डिटेक्टिव स्टोरीज की शुरुआत की। Telltale Heart, The Pit and the Pendulum were some of his popular works. इसी दौरान राइटर्स का इंटरेस्ट था क्रिएटिविटी एंड इमोशंस एंड फोकस was the inner feelings, not reason. During this time, there was another parallel movement, Transcendentalism, which came to America from Europe. ये movement हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नेगेटिव टीचिंग्स के अगेंस्ट थी and was highly influenced by Buddhism and Hinduism. इस थॉट के अकॉर्डिंग मैन को रिलीजन की नहीं बल्कि अपने इंट्यूशन में बिलीव करना चाहिए टू अटेन गॉड। ये मानते थे गॉड हर चीज में है, चाहे वो ग्रेन ही क्यों ना हो। रैल्फ वाल्डो एमर्सन वाज इन अ वे द फाउंडर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म। उनकी राइटिंग सेल्फ रिलायंस पर फोकस करती थी। इसी सोच के कुछ और राइटर्स थे, थोरो, जो कि एमर्सन के फ्रेंड थे। थोरो ने अपने बुक वॉल्डन में लिविंग अलोन क्लोज टू नेचर की डिपिक्शन दी है। उनके हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नॉट डन मच गुड and he also believed that laws can be disobeyed if they are wrong. Actually, romantic period grew in phases. There'll be another video on this topic soon. In one of the phases, writers focused on dark side of human nature. जो human nature की कमी है उस पर। Some interesting works was Scarlet Letter by Hawthorne, जिसकी summary आपको चैनल पर मिल जाएगी। Around 1860, there began a period of realism. राइटर्स ने पुराना स्टाइल छोड़ा, नया स्टाइल अपनाया एंड फोकस वाज ऑन डिस्क्राइबिंग लाइफ एज इट इज। नॉवल वाज मेन जॉनर। इस पीरियड में लोकल कलर ऑथर्स छाए रहे जो पर्टिकुलर कस्टम्स को डिस्क्राइब करते थे, जैसे मार्क ट्वेन, जिन्होंने एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन में वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया थ्रू आइज ऑफ एन अनसिविलाइज्ड बॉय। इन 1890s देयर सॉ रियलिज्म, जहाँ राइटर्स का मिशन था टू कन्वे रियलिटी ऑफ लाइफ। कैरेक्टर्स वर सीन स्ट्रगलिंग इन लाइफ। इस दौरान ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के बीच भी कोल्डनेस बढ़ती गई। Some prominent Civil War writers were Stephen Crane, Henry Wadsworth Longfellow, and Walt Whitman. During the Civil War period, characters were again more realistic, and there appeared some African American voices too. Common writers related to Civil. So, ये थी guys important information related to growth and eras of American literature. I hope you find this video useful, and if you like to know more of this content, please remain subscribed to the channel and tap the bell icon to get updated. Have a nice day and all the best for your preparation. See you in the next video.